You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, राइडिंग बंद है, बट अपेरेंटली देयर सम गुड न्यूज़। आई मेड अ कॉल टू कावासाकी yesterday and they said they're accepting bikes for service and repair. So मुझे अपनी बाइक की सर्विस करवानी थी and I just immediately fixed an appointment with them for today and it's early morning right now, so अभी मैं बाइक की सर्विस करवाने जा रहा हूँ। सो एज़ यू कैन सी हेयर, मेरी बाइक अभी सिर्फ 859 किलोमीटर्स चली है। मैंने ये बाइक फरवरी एंड में ख़रीदी थी एंड सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स नाउ। लॉकडाउन की वजह से इट वाज जस्ट स्टैंडिंग एट माई होम फॉर 1 month एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक इट आउट। Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. अच्छा इसका लीजिए। You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. So guys, now coming to the main part of this video, the question is कि मैंने कितना पे किया इसकी फर्स्ट सर्विस के लिए। सो बिल का ब्रेकअप 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट इज़ द लेबर अमाउंट, सेकंड इज़ द स्पेयर्स अमाउंट। सो मेरा टोटल बिल इस फर्स्ट सर्विस के लिए आया 7,569 रुपीज़, जिसमें लेबर अमाउंट था 2,891 रुपीज़ एंड स्पेयर्स अमाउंट था 4,678 रुपीज़। इस बिल का एक स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा ताकि आप पॉज करके देख सकते हैं डिटेल में क्या क्या इंडिविजुअल आइटम्स थे। तो
जस्ट टू गिव यू एन आइडिया लेबर कॉस्ट में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है. फर्स्ट इज़ क्लच एडजस्टमेंट जो 177 रुपीज़ की थी. देन कूलेंट टॉपअप 118 रुपीज़. ड्राइव चेन एडजस्टमेंट 354 रुपीज़. ड्राइव चेन क्लीन 180 रुपीज़. engine oil replacement 354 rupees. Final inspection 177 rupees. Oil filter element 531 rupees. Polish 3M 180 rupees. And then washing 413 rupees. तो ये मोटे मोटे मेरे लेबर चार्जेस थे जो इस सर्विस में हुए हैं. कमिंग टू द स्पेयर्स. नाउ सर्विस सेंटर ने मुझे सजेस्ट किए थे 3 टाइप के इंजन ऑयल्स. फर्स्ट वाज लिक्विड मोली का इंजन ऑयल 10W40. सेकंड वाज मोटुल का 10W40 300V ऑयल जो आता है. एंड सेकंड वाज मोटुल का ही 7100. आई थिंक वो 10W50 है. सो आई ऑप्टेड फॉर लिक्विड मोली 10W40. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रेकअप ऑफ व्हाट ऑल स्पेयर्स हैव बीन यूज्ड इन दिस सर्विस एंड उनकी क्या कॉस्ट थी. तो लिक्विड मोली का जो इंजन ऑयल था वो 3.6 लीटर्स मेरी बाइक में डाला विच कॉस्टेड ऑलमोस्ट 3600 रुपीज़. उसके बाद जो इंजन ऑयल फ़िल्टर होता है दैट कॉस्टेड मी 1020 रुपीज़. देन आई बिलीव इंजन ऑयल की एक गैस्केट डलती है विच इज़ 30 रुपीज़. एंड कूलेंट टॉपअप हुआ विच इज़ 32 रुपीज़. सो टोटल स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट हो गई 4678 रुपीज़. Now this is the screenshot of the invoice I received. You can just pause the video and have a look if you want to go in detail. So if you like this video, please do share the video, like and give some good comments. Show me your love. I'll be putting in more videos. Thank you so much.